फरमान नंबर 24 कलाम इमाम मुबीन से आगाज करेंगे। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा। हय्युल कय्यूम अली अल्लाह मदद फरमा। या मौला तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला। तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम, तेरे मुबारक नाम से आगाज करते हैं मौला। कलाम इमाम मुबीन फरमान नंबर 24। हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, पीर सदरुद्दीन ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की और कितनी दूर से आकर तुम्हें सत पंथ यानी कि रास्ता बताया। सत पंथ सच्चा रास्ता, जिसे हम दुआ के अंदर सिरातुल मुस्तकीम की दुआ के लिए सूरह अल-हम्द में पढ़ते हैं कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाना, हमें सीधे रास्ते पर आगे बढ़ाना। कभी कभार हम अपनी धुन के अंदर sometime in our ignorancy when we talk about Siratul Mustaqim, Satpan Deen, we say that all religion are equal and we are all on the same path. ठीक है, इमाम ने हमको अपने दीन भाई और किसी गैर मजहब की गिला गिबत बुराई करने से रोका है। We are not saying they are wrong. We need to understand how we have all taken a path, but there is only one straight path. हम सब ने अपने अपने मज़ाहिब के अंदर एक रास्ता इख्तियार किया है और उसके अंदर से एक रास्ता सीधा है। What does it mean, सीधा रास्ता? A shortcut, a easy way to get to from A to Z. सीधे रास्ते से मुराद छोटा रास्ता, साफ रास्ता, जिससे हम यहां से वहां तक पहुंच सके। Remember, every religion has taken a path, and sometimes we say they are all same. If you are talking about we all have taken a path, yes, we are all same. But when we are saying we have taken a straight path, then there is only one straight path, and that is the way of Imam. अगर हम कहते हैं रास्ता लिया है तो ठीक है, तमाम ने रास्ता लिया है, लेकिन जब हम सीधे रास्ते की बात करते हैं, इमाम के रास्ते की बात करते हैं,
तो वो सिर्फ एक ही है। अगर ये बात ना होती, लेट्स से जस्ट फॉर अ सेकंड that is not true, every religion, every tariqa are on a straight path, then why would Peace Azzadin would take a burden, hardship, months and months of walk and traveling, and then years and years of teaching? As a Hindu, if you are already on the straight right path, I hope you understand what I'm trying to say. कि कभी कभार हम अपनी इग्नोरेंसी के अंदर ये कहते हैं कि सभी मजहब ठीक है अपनी जगह पर। हाँ, ठीक तो है, मगर वो सीधे रास्ते पर नहीं है, क्योंकि सीधा रास्ता एक ही रास्ता है और वो इमाम ज़मान का रास्ता है। I hope I am making myself very clear, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें इस बात की समझ नहीं होगी, सिरातुल मुस्तकीम कौन सा रास्ता, इमाम का रास्ता, अगर उसकी समझ नहीं होगी, तब तक हम ये कहते रहेंगे कि तमाम मज़ाहिब बराबर बराबर है। एक आखिरी मिसाल के साथ हम आगे चलेंगे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। पहले हम, चूंकि बहुत सारे हमारे दोस्त कराची के अंदर रहते हैं, अगर आपको करीमाबाद से खारदर जाना है तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते से आप जा सकते हैं। 3-4 अलग अलग रास्ते हैं। ऊपर से घूमकर, मालीपुर से घूमकर आप खारदर जा सकते हैं। आप बंदर रोड से भी जा सकते हैं, आप सदर से भी जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं। सेम एग्जांपल ये तमाम मज़ाहिब की है। And if you take the example from going from a place A to Z, you could take a lot of different ways to get there. But you can always know, you should always know there is a one straight path, one easy way to get from A to B. And normally what do? You take that easy path from A to B. That is Sirat al-Mustaqim, that is Satpant, सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता. So we need to keep this in mind. तुम्हें दीन मजहब की खबर नहीं थी. This half a line tells us that when we were Hindu, we did not know anything about the true religion. We did not know anything about true religion. Why? Hindu mazhab is also a religion. मौला फरमाते हैं कि आपको दीन मजहब की खबर नहीं थी, लेकिन हिंदू भी तो एक तरीका पालते हैं, एक रिलीजन को पालते हैं. चूंकि हिंदू के अंदर और हिंदुइज्म के अंदर जो उनके राम और कृष्णा और दूसरे पैगंबर आए, वो आज से 6,500 साल पहले आए. जब उन्होंने वो रास्ता बताया था, उस वक्त तो वो बिल्कुल ठीक ठाक सीधा रास्ता था. In the Hinduism, their Ram and Krishna, their prophets, at their time,
close to 6,500 years ago. At that time, that was the straight path. But when they left and did not continue to follow the prophets and the current guidance, what happened? That path which was straight and easy, they lost it. क्योंकि खुदा के हुक्म से इल्म और हिदायत कंटिन्यू है आगे से आगे. Let's take the same example again. When we are on highway, there are signs to guide you. अगर दुनिया की हम मिसाल लें तो जैसे जैसे हम रास्ते पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अलग अलग निशानियों से हम आगे से आगे बढ़ते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि एक साइन आ गई और बस खत्म. ऐसा नहीं है. दैट इज आर्ट ऑफ नेचर. वो हमारे नेचर के खिलाफ है. गाइडेंस, हिदायत, इल्म नीड्स टू बी करंट. हर हमेशा ताजा होना चाहिए. हम बासी रोटी नहीं खाते हैं, हम ताजा रोटी पसंद करते हैं. When it comes to food, we like fresh food. When it comes to clothes, we like fresh clothes, clean clothes. We do not wear the same clothes and we do not eat the same food years after years. We clean and we make it perfect, fresh. इसी तरह से मजहब के अंदर भी हाजिर और मौजूद इमाम, गाइड, हिदायत, इल्म जरूरी है. मुल्ला फरमाते हैं कि तुम्हें दीन मतलब की खबर नहीं थी, क्योंकि जब हम इस्माइली बनने के लिए पीर सदरुद्दीन के पीछे चले, उस वक्त तक हम ऑलरेडी 6,000 साल पुराना कोई मजहब पाल रहे थे और हमें दीन मजहब की कुछ खबर नहीं थी. कुछ खबर नहीं थी. क्योंकि अगर वो दीन सच्चा और पक्का होता और हमें दीन मजहब की खबर होती, तो फिर हम पीर सदरुद्दीन के पीछे क्यों चलते हैं? और पीर सदरुद्दीन हमको कौन से सच्चे दीन, सचपंथ की तालीम देते हैं? देखिए, मौला आगे यही फरमाते हैं इसके अंदर कि तुम हिंदू थे, तुम्हें तालीम देकर इस रास्ते पर ले आए. इट वॉज द इल्म दैट पीर सदरुद्दीन गेव टू आवर forefathers. इल्म 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 देकर वो हमें सीधे रास्ते पर ले आए हैं. तुम्हारे बाप दादा को बहुत मेहनत से ये रास्ता बताया. इट वॉज नॉट इजी. इट वॉज नॉट इजी. अगेन they were following a religion which was 6,000 years in making. How hard would that be to convert them to Satpant Deen? Imagine. कितना मुश्किल होगा कि किसी को आप कहें कि आप जिस मजहब को पाल रहे हैं 6,000 साल से, वो सच्चा दिन नहीं, ये सच्चा दिन है. वो सच्चा दिन था किसी जमाने में, लेकिन बहुत सारा अरसा गुजर जाना और हिदायत का ना आना. It was a true religion at that time, 6,000 years ago, but due to
not listening and following the prophets after them. Again and again, this religion is no longer current. Religion तो है, current नहीं है, ताजा नहीं है. उसके अंदर जो तालीम है अब वो वैलिड नहीं है. तो मौला ने फरमाया उनको बहुत मेहनत से ये रास्ता बताया. तुम जमात अपने बाप दादा के रास्ते पर चलते हो. कौन सा रास्ता बाप दादा का? वो जो हिंदू थे या वो जो उन्होंने बहुत मेहनत से सीखा पीर सदरुद्दीन से? कौन सा रास्ता? वो रास्ता जो उन्होंने पीर सदरुद्दीन से सीखा, इस्माइली तरीका. हम इसके बारे में अभी 2 मिनट में कुछ और बातें करेंगे, जस्ट फॉर आवर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. आप अपने बाप दादा के रास्ते पर चलते हो, इस तरह चलना जो रास्ता पीर सदरुद्दीन ने बताया है. कौन सा बाप दादा का मतलब रास्ता? जो पीर सदरुद्दीन ने बताया है, ना कि वो कि जो 6000 साल से पाल रहे थे. विच वे? द वे ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर forefather, not that 6000-year-old religion that they were observing, but the religion and the way the Pir Sadruddin taught them. That is the path you should follow. I'm emphasizing on this part. The path the Pir Sadruddin taught our forefather, that's the path we should follow. Not the path that our forefather were observing before Pir Sadruddin came to Indo-Pak. वो मजहब जो हमारे बाप दादा 6000 साल से फॉलो कर रहे थे पीर सदरुद्दीन के आने से कबल, वो रास्ता नहीं. वो रास्ता जो उन्होंने सिखाया, दिखाया, पढ़ाया, वो रास्ता. मुला आगे फरमाते हैं तुम पीर सदरुद्दीन के गिनान पढ़ते हो तो उस मुताबिक चलना ही चाहिए और अमल करना चाहिए. गिनान को पढ़कर, पिछले फ्राइडे की अगर आप सेशन के अंदर थे तो हमने गिनानों की समझ के बारे में कुछ बातें की थी और उसको समझने की कोशिश की थी कि गिनानों को हमारे पीरों ने वो वोकेबलरी के अंदर, उस जबान के अंदर, उस कल्चर को लेते हुए जो कल्चर हमारे फोर फादर समझते थे, हमको सिखाया. If you were with us last Friday, a week ago, we talked about the understanding of Ginan. That our peer used the vocabulary, the words, the culture, the things that we understood, our forefather understood, and that taught us Ismaili Tariqa with that language. For example, Kaljug. In our religion, what is the term? Dore Kiamat. So which term are we going to use today? अगर हम हिंदू हैं तो हम कलजुग यूज करेंगे, अगर हम इस्माइली हैं तो हम दौरे क़यामत को यूज करेंगे. आपने देखा कि ये टर्म्स हमारे लिए इस्तेमाल की क्योंकि वही टर्म हम समझते थे. हमें दौरे क़यामत की कोई बात समझ नहीं आती थी, कोई अंदाजा नहीं था.
हमें रीइंकारनेशन बताया, क्योंकि वो हमें 6000 साल तक पढ़ाया गया था। लेकिन इस्माइली तरीके में रूह का आगे से आगे बढ़ना है, यानी कि जब इंसान गुजर जाता है तो वो रूहानी जिंदगी के अंदर आगे से आगे से आगे से आगे जाता है। लेकिन हिंदू मजहब की तालीम ये नहीं है। वो तो मरता है बेचारा, गुनाह किया तो भी दुनिया में वापस आया, अच्छे काम किया तो भी बेचारा दुनिया में वापस आया, वो तो इसी दुनिया में पीस के रह जाएगा। बुरे काम किया, गरीब हो गया, अच्छे काम किया, पैसे वाला बन गया। खुदा की रहमत का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। आपने देखा जब पुराना मजहब हो जाता है, यू सी इन द word or the understanding of reincarnation, when you die, regardless of good or bad, sinful or pure, sinful, you come back to this world again. Good, you come back to this world again, because the concept is of reincarnation. What happened to the mercy and the rahmat of Allah? उसमें there is no interference, there is no mercy, there is no role of mercy in reincarnation. Mercy does not play any role in reincarnation concept. आपने अच्छे काम किए तो भी दुनिया में वापस आएंगे, बुरे काम किए तो भी दुनिया में वापस आएंगे, यानी कि आप तो दुनिया के अंदर फंस गया आकर। जबकि इस्लाम के अंदर और इस्माइली तरीके के अंदर इमाम की रहमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने अच्छे काम किए, आपकी रूह जल्दी जल्दी तरक्की करेंगी। आपने बुरे काम किए, गुनाह किए, आपकी रूह आस्ते आस्ते तरक्की करेंगी, लेकिन तरक्की करेंगी। फर्क क्या है? जल्दी से तरक्की करेंगी या आस्ते आस्ते तरक्की करेंगी। इन द इस्लाम एंड इस्माइली तरीका, द मर्सी of the imam plays a huge role. If you do good, your soul will increase the levels faster. The journey will be faster. But it is the journey of the soul, not of the body. And if you do bad, you are sinful, you're still not going to come back in this world to do what you did not do before. What will happen? With Imam's mercy, he will still take you on that journey of the soul. It may take a little bit longer, a little bit time. If you have heard those 2-3 lectures, Ruh Ka Safar, the journey of the soul, then you remember that where we start and how do we go back to the Imam. If you remember those charts and if you remember those lectures, that is the concept of Ismaili Tariqa. So what are we learning today? That our peers use the terms and the language, the vocabulary, which we, our forefather, understood and gave us the Sachpant Deen. But today, after 600 years, if we are saying we still are Hindu and we still only understand those terms and terminology, and we have not moved an inch forward. अगर हम आज 600 साल के बाद ही कहते हैं कि हमारी जबान, हमारा कल्चर, हमारा सोचने का तरीका हिंदुइज्म है,
तो हम ये कहते हैं कि हमने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। आई होप वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर नॉट। We need to, if we have not already, learn the language, the terms, the vocabulary of our America. We are not Hindu, we are Muslim, we are Ismailis. वो टर्म जो हमें हमारे पीरों ने हमारे फोरफादर को दिए थे सिखाने के लिए, and I'll give you last example and then we will move forward in this Farman. When we were in KG and nursery and first grade, they taught us ABC 1, 2, 3. How funny it would be if someone says, could you give me $100? कितना मजाक का खेस होगा अगर आज हमें, चूंकि बचपन में 1, 2, 3 ABC सिखा था, कोई हमें कहे कि 100 रुपये दो और हम गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि we don't know how to get to 100 without counting 1, 2, 3, 4, 5. How funny that would be. No, you don't do that anymore, do you? Or if someone asks you to write a name or a small word or sentence, and every time you start to write, you would say A, B, C, D. Okay, I need D. Write it down. A, B, C, D, E, F, G. करते, when we get to that fine word, fine alphabet, we write it down. How funny that would be. No, we don't do that, do we? Why? We are no longer kids. पीर सदरुद्दीन ने हमें बच्चों की तरह तालीम दी थी। आज हम बच्चे नहीं हैं, or at least I hope we are not children. If we are children, if you saying no, I'm still a child, then that is okay. You can continue to read ABC and 1, 2, 3. But I hope we are not. It's been 600 years into making. आज 600 साल के बाद अगर आज भी हमें वो जबान यूज करनी पड़ती है जो हम अपने मजहब के बचपन में यूज करते थे, तो ये तो एक सैड पार्ट हो गया, अफसोस की बात हो गई। चले आगे चलते हैं। पीर सदरुद्दीन के गिनान पढ़ते हो तो उसके मुताबिक चलना ही चाहिए और अमल भी करना चाहिए। पीर सदरुद्दीन ने जिस तरह फरमाया है कि सच बोलना। अब यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से पीर सदरुद्दीन ने हमको बेसिक एलिमेंट्री तालीम दी। You can see from this next line how P. Sadruddin had given us so basic and elementary knowledge, teaching. सच बोलना, झूठ ना बोलना। आज पापा नहीं बोलते हमको सच बोलो झूठ नहीं बोलो। पापा क्या बोलते हैं? फॉलो द एथिक ऑफ इस्लाम। उसके अंदर सब कुछ आ गया। आपका पूरा मजहब का चलने का और चलाने का जो तरीका है वो इस वर्ड के अंदर आ जाता है, एथिक ऑफ इस्लाम। मुलापा does not need to spell it out for you because you are no longer children. You see, he is treating us like an adult. मुलापा आज हमको कहते हैं कि आप इस्लाम के रास्ते पे चलो। वो हमको बैठ कर नहीं बताते हैं कि आप सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि इमाम हमें अपने फरमान से समझाते हैं कि आज आप
बड़े हो गए हो, अब खुद समझ जाओ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. You are adult, you know what is right and what is wrong. Imam just gives you a line, a word to follow, and that is ethic of Islam. And that encompasses all the goodness, all the goodness of our tariqa. सच बोलना, झूठ ना बोलना, बीड़ी सिगरेट ना पीना, शराब ना पीना, पराया माल ना खाना, इसराफ फरमान के मुताबिक चलना. फर्दर मौला साहब, तुम जमात अभी यहाँ हमारे हुजूर में हो, फिर असल मकान की तरफ जाओगे. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आपने देखा कि मौला फरमाते हैं कि जिस तरह से अभी तुम मेरे हुजूर में बैठे हो, इसी तरह से तुम कल अपने ओरिजिन के अंदर जाओगे. डू यू सी एनी वर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन है? क्या मौला ने फरमाया कि आज मेरे सामने अभी बैठे हो, कल मर जाओगे, दूसरा जन्म लोगे, वापस मेरे सामने बैठे होगे? ऐसा नहीं फरमाया. मौला दिन से today you are sitting in front of me, you will die, and through reincarnation you will be born again and you will be sitting in front of me again. He did not say that, did he? What did he say? You are sitting in front of me today and then you will return back to your origin. That is the teaching of Ismaili Tariqa, of the Islam. कब हम ये को पढ़ते हैं? Do we just read and say this or do we believe it? When we say we are from him and we will return back to him. जब हम कहते हैं तो खाली हम कहते हैं कि यकीन नहीं करते हैं कि हम तेरी तरफ से हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाने वाले हैं. This one line from the Quran, and that is ayat 156 in Surah Baqarah. That we are from you and we will return back to you. This line of teaching tells us there is no more reincarnation. There is no more, meaning that we as an Ismaili Muslim do not believe in the old concept, old teaching, but we as an Ismaili follow the current teaching and learning. So we have to be very careful how our concepts are built. हमको बहुत ही ख्याल करना है, क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट, हमारा अकीदा गलत होगा तो हम कब सचपंथ दीन पर चलेंगे? If our concepts are ill, not correct, then how and when will we walk on this Satpant, Sirat al-Mustaqim, the way of the Imam? When will we become Ismaili Muslim? Because our concepts, thoughts, beliefs are still sitting in a religion which is no longer we are following. इसलिए मौला ने इस एक पैराग्राफ में अंदर हमको अच्छी तरह से समझाया कि पीर सदरुद्दीन ने जो दीन, जो सचपंथ दीन आपको सिखाया है, आप उसके ऊपर चले, ना कि वो दिन जो 6000 साल पुराना है. He took the trouble and hardship to taught us the right path. Follow that path.
That is the path it was taught to your forefathers. And your forefather, fortunately, believed and came to Peace Azadeen and became Ismailis. And Shukr Alhamdulillah, because of their good niyat and good way of thinking, correct thinking. Because you see, all Hindu did not become Ismaili. It was their good deed that they became Ismaili. There is a favor upon us that they became Ismaili. And therefore, we are Ismaili today. We are Ismaili today. Ismaili Muslim today. We are not Hindu. मौला फरदर से तुम जमात अभी यहाँ पर हाजिर हो, फिर असल मकान की तरफ जाओगे। जमात खाने में नसीहत करो और गिनान के मुताबिक चलो। That is exactly what we are doing today, according to Imam's Farman. That we supposed to talk about this thing within the Jamaat. That is exactly the part you and I are playing today. गिनान के मुताबिक चलो, शैतान के फरेब में ना आना। हमेशा जमात खाने में आकर दुआ, गटपाट, नियाज, आबे शफा पियो। गिनान के मुताबिक चलो, झूठ ना बोलना। गिनान पर चले तो सच्चा दीन मिला। अब तक गिनान के मुताबिक चले तो सच्चे रास्ते पर रहे। I wanted to explain one more word, गिनान. What does गिनान means? Ilm. And what have Imam said? You follow the गिनान, you follow the ilm. इल्म वाली रूह ही दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ती है। Which soul will rise step by step? इबादत वाली, अच्छे काम करने वाली, या इल्म वाली? मौला ने फरमाया इल्म वाली रूह दर्जा बदर्जा ऊपर जाती है, क्योंकि इल्म के अंदर आपके आमाल भी शामिल है और आपकी इबादत भी शामिल है। Within the ilm, your ibadat and your good deeds are included, because without the true knowledge, the ilm hakiki, ilm of the Imam, how would you perform good deeds and how would you perform a good ibadat? It is the ilm which Peer has given us. It is the ilm which Imam is drawing our attention toward. ये इल्म ही है जो आपको इस जिस्म से निकालकर इमाम के रूह के अंदर इमाम के रास्ते पर चलाएगा। इल्म इल्म इल्म, गिनान का मतलब ही इल्म होता है। तो जो इल्म गिनान के अंदर छुपाया हुआ है, आप उसको ले लें। जो टर्म्स हमारे पीरों ने यूज की हमारे फोरफादर को सिखाने के लिए, उसके आप अच्छी तरह से मानी इस्माइली तरीके के अंदर से सीख लें, ताकि आपके पास एक अच्छा इल्म का मयार हो। लर्न द टर्म्स which our Peace Azadin taught us, taught our forefather. Use the correct terms in Ismaili tariqa, so your concept may be current and correct, ताकि आपका जो सोचने का तरीका है वो जदीद भी हो और दुरुस्त भी हो।
क्योंकि आज के ज़माने में हम जो टर्म्स एंड टर्मोलॉजीज यूज करेंगे वो करंट होगी और करेक्ट होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट पैराग्राफ। मुलाफिर शैतान एक रूप में नहीं इंसानी रूप में भी आकर फरेब देता है। दिस लाइन होल्ड्स अ कॉन्सेप्ट। इस लाइन के अंदर एक अजीबोगरीब तरीके से हमें सिखाया गया है। Some of you who have been with us for a while may have learned this, but for our other friends who are not very regular in this session, shayateen are of the two kind. शैतान दो किस्म के होते हैं, इंसी और जिन्नी। Shayateen are of the two kind, the human, seen, and unhuman, unseen. You may ask, which one is the dangerous शैतान? इस दोनों में से खतरनाक शैतान कौन है, जिन्नी या इंसी? Which shaitan is more dangerous than the other? The one in the human form or the one that you cannot see? Which shaitan is more dangerous? Very strange question, right? Insi shaitan is the instigator and more dangerous therefore. And I will repeat again, okay, in a minute. इंसी शैतान ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो हमें बुरे काम की तरगीब देता है। The human shaitan is more dangerous because he is the instigator and therefore he is more dangerous. The जिन्नी शैतान वो हमारे अंदर एक खामोशी से बैठता है and he does not get activated until इंसी शैतान does his part. हमारे अंदर का जो शैतान है वो खामोशी से बैठा है। वो कब हरकत में आता है? जब इंसी शैतान हमको तरगीब देता है बुरे काम की। Let's take an example. You may not see this insi shaitan, the human shaitan, as a shaitan. And Mullah says what? Shaitan, the insi shaitan are amongst you. They are near you. And they take you onto the wrong path. मुला फरमाते हैं कि ये इंसी शैतान जो है वो आप ही के दरमियान में है और वहीं से वो आपको गलत रास्ते पर डाल देते हैं। Let's take an example. We are in जमात खाना. What could be the best place, the pure place? जमात खाना, right? जमात खाना ही एक पाक और पाकीज़ा जगह है। लेकिन आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई बहन, कोई जमाती मेंबर आपको किसी के बारे में एक बुरी बात, गॉसिपिंग, गिला गिबत करके चले जाता है। उसने अपना काम कर दिया, हालांकि वो शैतान जैसा नहीं दिखता था। That Jamati member, the brother and sister or the friend within the Jamaat that came and did some gossiping, did he look like a shaitan? No, he looked just like your friend. वो gossiping करके चला गया। He told you about somebody. Now your inner shaitan, आपके अंदर जो जिन्नी शैतान है वो हरकत में आ गया। That shaitan within you was activated by that
friend who have gossiped about someone. चूंकि उसने किसी की बुराई की, अब आप अपने दिल के अंदर उसको मल्टीप्लाई करते जाए। हाँ, वो तो मेरे साथ भी ऐसा करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू यूज अ लाइव एग्जाम्पल। समवन टेल्स यू दैट सो एंड सो इज नो गुड। कोई आपको आगे बोलता है कि फला 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 अच्छा नहीं है। Your inner shaitan got activated and you started to think, oh yeah, she's so right. That person is no good. Not only the person is no good with me, he's no good with my brother, he was not good with my mother. Oh, matter of fact, he was not good with my grandma. Next thing you know, there is small pebble became a mountain. इससे पहले कि आप अपने आप को बचाएं, वो छोटा सा जो पत्थर मारा था उसने, वो एक पहाड़ बन गया कि हाँ, वो तो बहुत ही बुरा है, वो तो मेरे साथ क्या, मेरे भाई बहनों के साथ भी बुरा है, मेरी माँ के साथ भी बुरा था, मेरी दादी के साथ भी बुरा था, मेरी नानी के साथ भी बुरा था। आपने देखा, इफ यू कीप योर डोर्स ओपन, ये हमारे डोर है, दिस आर आवर डोर्स। इफ यू कीप देम ओपन टू इनसी शैतान, अगर आप अपने दरवाजों को खुला रखेंगे, शैतान को पत्थर मारने की इजाजत देंगे, तो वो आपके अंदर के शैतान को उठाएगा, जगाएगा, और फिर वो अपना काम करेगा, और वो एक पत्थर को, पेबल को एक माउंटेन, एक पहाड़ बना देगा। बी केयरफुल ऑफ इनसी शैतान, डू नॉट लेट देम इनसाइड यू, डोंट हेयर, डोंट इंडोल्ज इन गॉसिपिंग। किसी की गिला गिबत को सुने भी नहीं, किसी की गिला गिबत करे भी नहीं, किसी की गिला गिबत देखे भी नहीं। 3 दरवाजे, ये और ये। Keep those doors closed, because if you keep these doors open, then shaitan will enter in your heart, and next thing you know, कि आपका दिल जो है वो शयातीन की बातों से भर गया। So be careful. We will continue on the same line inshallah next week, because there is much to be learned here. So let me stop here, and inshallah we will continue from page number 22, Kalam Imam Mubin part 1. Ji.